गुरुजी थोड़ा मार्केश के बारे में बता दीजिए। या डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी हॉरोस्कोप, लुक इन एनी काइंड ऑफ हॉरोस्कोप, मैं आपको मार्केश के बारे में बता भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। जस्ट अ मिनट। I'm sharing my screen. This is one of the workshop which I generally take. उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन इस समय देख पा रहे हैं तो आइडियली जो होता है सेकंड हाउस यानी कि द्वितीयेश और सेवंथ हाउस यानी कि सप्तमेश जो है, इनको हम लोग हमारे ज्योतिष की लैंग्वेज में जो है मार्केश बोलते हैं। सो मार्केश बेसिकली वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर ये देखो और टेक्निकली जाओगे तो ये देखो लिखा हुआ मैंने मारक स्थान, सी माय कर्सर, मारक स्थान। सो सेकंड एंड सेवंथ हाउस इज बेसिकली मारक स्थान इन द हॉरोस्कोप। एंड विन इन द विंशोत्री दशा जनरली, अगर आपका विंशोत्री दशा चल रहा है, विंशोत्री दशा इज अ टाइम लाइन बेसिकली what kind of phases we are going through. When in the your Vimshotri Dasha, certainly if you're going through your, Lord of second house, like suppose in case of Elizabeth, if I talk, she is having a horoscope of like she is governed by Scorpio and she is having 9 number in the second house. 9 number in the second house. Okay. So that means in her case, Jupiter is the Markesh. Markesh. This is how we have to think. And in her case, now we will go give count here 8, 9, 10, 11, 12, 1 and 2. Now seventh house, 2, seventh house. Seventh house, Venus. that means that shows in the seventh house there is a Rashi called Vrishabh Rashi, Taurus. So when we talk about Taurian Rashi, that means Venus and Jupiter both are not supporting in her case. So Marak, whenever she will go through those Vimshotri Dasha, Antardasha, Pratyantardasha, okay, this is called mahadasha, antardasha and pratyantardasha. अगर टेक्निकली समझेंगे तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा. When we talk about all these three dashas, इनमें से कोई भी पीरियड जब आता है, okay, तो in that case, results will be not favorable for her. This is how we have to understand. And when we talk about how to control the Markesh, we have to always do the donations. लाल किताब का सारा बेस जो है, रेमेडियल बेस जो है, वो डोनेशंस. So if you want to suppose, control now Jupiter, how you will control Jupiter? What kind of donations you will do? You have to simply, you can, probably आटा होता है, आटा फ्लोर, आप समझते हैं आटा. आप गुना हुआ आटा जो है, गुना हुआ आटा का पेड़ा जो है गाय को खिलाओ on Thursday, so it will be in control. Okay, in the same way, if you donate some vastra, yellow vastra to some old person, then Jupiter will be in control. Maybe you may support some pilgrimage, जो यात्रा होती है, कोई बुजुर्ग आदमी wanted to go to some तीर्थ, you sponsor his yatra. Jupiter will be happy. This is how you have to do the donations. And in the same way, when you want to control the Venus, for example. Now, in case of Venus, all these remedies, in case of Jupiter, you will do these remedies on Thursday. In case of Venus, you will do these remedies. No, not these remedies. You have to donate white things. White things. It could be rice, sugar, white clothes. To whom? To a woman. To a needy woman. The needy woman basically Shukra is what? Shukra is a glamorous lady. And Shukra is what? Shukra is Stree. Okay. So when you will donate something to a needy lady on Friday, so Venus will be in control. This is how you have to understand.
So donations are the best way to control any debilitated planets or Markesh planet. Now here you can see clearly, I have clearly mentioned the definition is given. Marakasthan. Marakasthan means second and seventh house. So at the end of the day, you have to realize sixth house, eighth house, 12th house are not auspicious. Clear? Simple formula. Yes, Sixth, yes, yes, sir. Dusthan Not na? auspicious. Dusthan. It is written here. See my cursor. Dusthan. Yes, sir. And when we talk about Marakasthan, Marakasthan means, they are the planets which are going to attack you in a prominent way whenever their Vimshotri Dasha will come. Specifically in the Vimshotri Dasha, they will attack you. So you have to control. So for controlling debilitated planets, for controlling Lord of 6th house, 8th house, 12th house, you have to do the donations. That will help. Okay, sir. And if you ask me, for example, sir, okay, these are unauspicious houses. Okay, we got the idea. But now what is good? First house, Exactly. fourth house, seventh house, and 10th Seventh house is house your and tenth Kendra house. basically. Okay. Indra. It is your Kendra. But in your Kendra also, again, seventh, as I told you, you can see here, it is mentioned that it is part of Kendra. So seventh not to be strengthened, but first house, fourth house, 10th house, always you can strengthen. Give them strength. Looking at the situation, whether the Lord of first house, fourth house, or 10th house is debilitated, if it is debilitated, never give them a strength. If it is exalted, then also no need to give strength, it is already powerful. If it is some, not exalted, not in a, I would say bad shape in any ways, okay, then probably you can go ahead with the things. You can, like for example, if you ask me, sir, how to wear the stones? Gemstones is another factor. Lot Yes. of people come to us, stone पहना तो जिंदगी बदल जाएगी सर. 20 साल तो हो गए मेरी नहीं बदली. ऐसा नहीं होता. जिंदगी बदलनी हो तो it is just transformation comes from the inside. और ऐसे बोलूं तो, अगर ऐसे बोलूं तो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम, ऐसे बोलूं तो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट योर थॉट प्रोसेस. अगर मैं आपको, मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर हम डिप्रेशन में, वी आर इन सिवियर डिप्रेशन, व्हाट वी शुड. आई टोल्ड देम ओके, क्या चाहिए? कि सर पैसा नहीं है. ऐसा नहीं है. मैं कहा ठीक है, अपनी एक आंख दे दो. अभी यहाँ पर एक डोनर की जरूरत है, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, देते हो? डोनर की जरूरत है, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, साथ में साथ एक आंख डोनेट कर. आर यू रेडी? नहीं नहीं सर, ये नहीं होगा. मैं डोंट से दीज वर्ड्स के पैसा नहीं. इफ यू आर हैविंग योर 5, योर बॉडी इज कंप्लीटेड ना, दैट मींस यू आर वेरी रिच. You are very very much rich. Don't worry about this. It is just about your attitude, how you implement the things. That is very simple. इसीलिए हम वास्तु में बोलते हैं दिशा बदलो दशा बदलेगी. सिंपल है. दिशा बदलो दशा बदलेगी. और आगे क्या बोलते हैं हम, अपनी मेंटल जो होती है, मनोदशा बदलोगे तो महादशा बदलेगी. ठीक है ना. आप मनोदशा बदलो, आपके ऊपर कोई सी महादशा चल रही हो वो आपके ऊपर अटैक ही नहीं कर ही नहीं सकती. लोग वहां से भी निकाल लाएंगे. अगर आप ऐसे सोचने लगो तो मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं. अब नरेंद्र मोदी तो ऐसे रोज सिर दे दे के हमारे अपना दीवारों पे. अगर जो क्रिटिसिज्म वो लोग झेलते हैं तो वो तो फिर क्या करेंगे. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपके अंदर. नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, यू कैन टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल. दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि ये जो हाउसेस का गेम है, अगर ये 12 हाउसेस आपको समझ आ गए, बेसिकली दीज आर द 12 डायमेंशंस. ये 12 डायमेंशंस हैं लाइफ के साथ जो एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर देंगे. और एक बार आपको ये चीजें कनेक्ट करनी आ गई ना, तो आप सॉल्यूशंस यूं निकाल लोगे 1 मिनट. अभी तक तो आप लोग जो पढ़ रहे हो मेरे साथ, जितने भी एडवांस के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने देखा ना हम लोग कितने लॉजिकल सारी बातों को निकाल रहे हैं. अब अमित
जी Yes, sir. दोस्त है, हम तो नहीं जानते. I met Elizabeth 3 months or I think so 2 months probably 2 or 3 months 2 back. months back. Okay, Yes, but sir. when we opened the horoscope, we do not know anything about it. When we opened the Right. horoscope, their wise we opened, and everything was so logically opened. This is the Yes. power of data science. Yes, sir. Everything. Agree to this. Yes, this is how I'm saying. I just mean to say कि you have to understand कि ये सब mental peace के अराउंड है. Mental peace कैसे लेके आएंगे? आप पहले यहाँ से शांत हो जाओ, आपको सब समझ आना चाहिए. ज्योतिष इतना आसान.